सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमने कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था फॉर द रिगार्डिंग द कंसेप्ट दैट amines related. So yesterday we posted a short reel about the amines, and now moving forward to the topic that is amines. So these are the my notes. Okay. So basically आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि what is the main concept of amines. Okay. So basically let's start. The first moving concept, that is nomenclature. Nomenclature. In nomenclature, we basically learns the two things. The first one is the common name. Apart from that, the second thing is that IUP system, International Union of Pure and Applied Chemistry. So basically, first let's start. So how we can form the ammonia? Sorry, how we can form the primary amine NH2 basically. So this is our the main derivative, that is ammonia. We can say that as ammonia derivative. We can say it as ammonia derivative. Ammonia derivative. Okay. सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि अमोनिया से एक सिंगल हाइड्रोजन जब मैं माइनस करूंगा वी गेट दी NH2 मींस मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. वी गेट दी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव. सो बेसिकली NH3 एक हाइड्रोजन माइनस और एक अल्किल ग्रुप मैंने ऐड कर दिया, वी गेट दी RNH2. सिमिलरली दिस इज गेट our primary amine. After the next procedure, removal of again one hydrogen atom and addition of one alkyl group, we get RNHR, secondary amine. Then again moving forward, removal of one hydrogen and again addition of one alkyl group, then we get RNRR, nothing but the tertiary amine. सो बेसिकली लेक्चर चालू करने के बाद हमने सबसे पहले नोटिस किया कि अमाइन कैसे बनते हैं. सो बेसिकली अमोनिया इज नथिंग बट इट इज द बेसिकली द अमोनिया डेरिवेटिव. अमोनिया से मैंने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया, एक अल्किल ग्रुप ऐड कर दिया, वी गेट द फर्स्ट प्राइमरी अमाइन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी एक हाइड्रोजन माइनस अगेन वन अल्किल ग्रुप गेटिंग टू विद अटैच्ड, वी गेट द सेकेंडरी अमाइन. एंड लास्ट में तीनों की तीनों मीन्स दोनों हाइड्रोजन हमने लॉस के और तीन अल्किल ग्रुप हमने अटैच किए with the tertiary amine. Okay. Now let's go for the nomenclature. 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 So what is meant by the nomenclature? Nomenclature means basically अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल है और तो हम उसको दो प्रकार से हम नाम दे सकते हैं. फर्स्ट वन इज द कॉमन सिस्टम एंड द सेकंड सिस्टम इज IUPAC सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके. सो बेसिकली लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द RNH2. द कॉमन नेम इज alkylamine. Alkylamine and the IUPAC name is Alkanamine. IUPAC name is Alkanamine. Alkana stands for R group. Similarly, in the case of secondary amine, that is RNHR. Okay. In secondary amine, the formula is RNHR. But remember that sometimes this both R group will be the same. Sometimes this R and this R group might be different. So in that case, we can give the common names like that. The first one is, if both the alkyl groups are the same, then we can write as dialkylamine. Or IUPAC name Alkanamine. If both the alkyl groups are the different, in that scenario we can write as alkylamine. Or IUPAC system, we can say that Alkanamine.
Alkanamine. Okay, so as lecture going on, we learn the IUPAC system and the common system of that, how we can give the names to the amines concept. Now moving forward, we can go for the methods of preparation. That's how we can perform the amines. Okay, so let's start. Method of preparation. Method of preparation. Method of preparation. Method of preparation. Okay, the first method is reduction of nitro compounds. First method is reduction of nitro compounds. Reduction of nitro compounds. So basically, what is meant by the reduction? Reduction is nothing but the addition of the hydrogen molecules. So सबसे पहले हमको क्या करना है, मुझे अमाइन तैयार करना है, तो मैं अमाइन कैसे तैयार करूंगा? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, मतलब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके मैं अमाइन प्राप्त कर सकता हूँ. तो कैसे कर सकते हैं? So let's start. So basically, let's take an example. Suppose this is our nitrobenzene. This is our nitrobenzene. Nitrobenzene in presence of nickel oblique platinum oblique palladium, or we can say that stannous oblique HCl. It gives that is amine, primary amine, you can say that NH2 plus twice of H2 plus twice of H2. So basically we can use here that is Fe plus HCl. Fe plus HCl. If अगर हम Fe plus HCl use करते हैं in this reaction, so we can say that this is one of the best preparation method reaction for the producing primary amine. Okay, so nitrobenzene से मैंने फॉर्म किया aniline. This is the nitrobenzene, and from nitrobenzene in presence of nickel and platinum and palladium, in presence of stannous and HCl, we get the aniline. Okay, so next method will be that ammonolysis method. So second method is ammonolysis method. RX plus twice of NH3. RX plus twice of NH3, it gives RNH2 plus NH4X. Okay, so basically the second method is that method of preparation RX plus twice of NH3, it gives RNH2 plus NH4X. So this method is carried as per the ammonolysis reaction in presence of NaOH and RX. से मुझे मिलेगा ammonia, and RX plus twice NH3, it gives RNH2 plus NH4X. So basically this reaction happens as per the SN2 reaction. SN2 reaction is nothing but the nucleophilic substitution biomolecular reaction. In 12th class, in the optical activity concept, we learn what is the SN2 reaction. SN2 reaction is nothing but we can say that nucleophilic substitution biomolecular reaction. 100% inversion of the configuration happen in the case of the chiral carbon will be there, and backside attack will be there. Backside attack of nucleophile, we can say that. So in the first case, we can say that Rx plus NH3. We know that nitrogen atomic number is 7, so electron configuration is 1s2, 2s2, 2p3, and we know that nitrogen has 3 bonds and 1 lone pair. In Marathi, you can say that nitrogen la 3 bond astat and 1 lone pair astat. Okay, so basically this lone pair attacks on the alkyl group. So we get what? That is RNH3 positive plus X minus N minus H3 plus. Okay,
So in first case we can say that this is the nucleophilic attack. This is the nucleophile attack. This is the nucleophile attack. Nucleophile attack. This is the first step. In the second step, we can say that is deprotonation. 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 सबसे पहले रिएक्शन में क्या होता है? नाइट्रोजन का लोन पे अटैक करता है अल्किल ग्रुप पे. So here we get RNH3 plus X minus. RNH3 plus X minus. Again, in the case of deprotonation, that RNH3 plus NH3, we get RNH2, this single hydrogen and NH3 plus NH4, we get our corresponding primary amine. So this is nothing but this is the SN2 reaction. It is nucleophilic substitution biomolecular reaction. Walden inversion will be there. No any kind of intermediate will be happen there. Either carbocation or carbanion will be there. In the SN1 reaction, that is nucleophilic substitution unimolecular reaction में carbanion कार्बोकेटन फॉर्म होता है, बट इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है. ओके, सो बेसिकली मीन्स ट्रांजिशन स्टेट तैयार होती है. ट्रांजिशन स्टेट कैसे बोल सकते हैं हम? सो बेसिकली वी कैन से दैट मतलब जैसे RNH3 का बॉन्ड बनता है वैसे X लीव हो जाता है एज अ गुड लिविंग ग्रुप करके, साइमल्टेनियसली मेकिंग एंड साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग ऑफ द न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस. So here we can say that the transition state will be there. Simultaneously breaking भी हो रहा है, simultaneously new bond making भी हो रहा है, तो इसको हम transition state बोल सकते हैं. Walden inversion है 100% inversion of configuration, and this follows the path of the SN2 reaction. Okay. Now moving forward. Now the second preparation method. Or the second preparation method from nitrile. So basically R single bond C triple bond N, R single bond C triple bond N in full hydrogenation. मीन्स अगर नाइट्राइल का मैं फुल हाइड्रोजनेशन करता हूँ इन टर्म्स ऑफ LiAlH4 हल हाइड्रोजनेशन. अगर डायरेक्ट मुझको हाइड्रोजन करना है और मुझे अगर अमाइन चाहिए तो मुझे फुल हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, LiAlH4 लिखना पड़ेगा. तो वी गेट आवर डिजायर प्रोडक्ट दैट इज RCH2NH2 एंड प्लस HCl. Sorry, not HCl, RCH2NH2. We get our desired primary amine. Means अगर LH4 मैंने यूज करा तो this bond breaks, here we get H, here we get H. Okay, then again this bond breaks, here we get H, here we get H. So we form RCH2NH2. This is a simple reaction. As per the from nitrile we can prepare the primary amine. Then moving forward, that is reaction number third. Stephan reaction. What is Stephan reaction? What is meant by the Stephan reaction? Stephan reaction is nothing but again the same. R single bond C triple bond N in presence of Stephan reaction means we can say that SnCl2 HCl मुझे दो बार रिएक्शन करनी पड़ेगी, then we get the corresponding our desired product that is nothing but the primary amine.
अगर एक बार अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो आई गेट R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl मीन्स मुझे मिलेगा इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। क्या मिलेगा मुझे? इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। अगेन और एक बार अगर मैं स्टीफन रिएक्शन करता हूँ SnCl2HCl then we get our corresponding product that is RCH2 NH2 plus HCl। अगर एक बार मैं स्टीफन रिएक्शन करता हूं तो मुझे मिलेगा इमन हाइड्रोक्लोराइड। अगर मैं वापस SnCl2HCl करता हूं तो मुझे मिलेगा RCH2NH2 and HCl। So this is our the primary amine. This is the primary amine. But हाइड्रोलिसिस नहीं करना है इस केस में। अगर मैं हाइड्रोलिसिस का पाथ अगर चूज करता हूं तो इंस्टेड ऑफ प्राइमरी अमाइन वी गेट दी अल्डिहाइड। वी गेट दी अल्डिहाइड दैट इज RCH4। In which case hydrolysis, if we do the hydrolysis, if we do the hydrolysis, then instead of primary amine we get the aldehyde। okay, so अभी तक हमने चैप्टर चालू होने से पहले चैप्टर चालू होने के बाद हमने काफी रिएक्शन देखे। द फर्स्ट रिएक्शन हमने देखे रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड से रिडक्शन हमने किया निकेल और प्लैटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में, देन वी गेट द एनिलीन। देन सेकंड रिएक्शन हमने देखा, उसमें हमने देखा कि बेसिकली जो रिएक्शन है वो SN2 पाथ को फॉलो कर रही है, मतलब बैक साइड अटैक हो रहा है। वाल्डन इन्वर्जन है, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन उसमें हमको दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये भी देखा कि द फर्स्ट केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, नाइट्रोजन का लोन उस पर अटैक करता है। सेकंड इसमें डीप्रोटोनेशन होता है, वेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन सेकंड रिएक्शन में हमने देखा कि फ्रॉम नाइट्राइल पे से हमने कैसी रिएक्शन हम फॉलो कर सकते हैं। थर्ड में हमने देखा कि स्टीफन रिएक्शन हमको 2 बार करना पड़ेगा। पहले हमको मिलेगा इमन हाइड्रोक्लोराइड, देन वी मूविंग फॉरवर्ड, देन वी गेट अवर द डिजायर्ड प्रोडक्ट प्राइमरी अमाइन। इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं करना है, अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वी गेट अवर करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड प्रोडक्ट। नाउ मूविंग द थर्ड रिएक्शन दैट इज फ्रॉम अमाइड्स। from amides that is number 4 from amides we can also prepare the primary amine. So we know that the functional group of amide is nothing but R single bond C double bond O and H2. This is amide, and in presence of LiAlH4 we get RCH2 NH2 we get RCH2 NH2. So this is the reaction that how we can prepare the primary amine. How we can prepare the primary amine by using amide in the reaction. Now moving to the main part of the reaction, that is nothing but the Gabriel Phthalimide synthesis reaction. Gabriel Phthalimide synthesis reaction. So let's start. What is the Gabriel Phthalimide synthesis reaction? Gabriel Phthalimide synthesis reaction. और one thing is that जब हमने R single bond C double bond O NH2 in presence of LiLH4 we get the R NH2 प्राइमरी अमाइन हमको मिला एज किससे? अमाइड से। सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर हमको चाहिए तो हम प्राइमरी अमाइड हम अमाइड से फॉर्म कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स as the number of carbon atoms are same on the reactant side is equal to number of carbon atoms are exactly same on the product side. अगर same number of carbon atoms अगर हमको चाहिए then we can use the preparation method of amides. Okay, definitely. So let's go for the next concept, that is Gabriel Phthalimide synthesis reaction. Gabriel Phthalimide reaction. Gabriel Phthalimide reaction. So basically what is the Gabriel Phthalimide reaction? So preparation of primary amines. This reaction is not for the secondary and tertiary amines के लिए reaction नहीं है. This is the reaction only for the primary amines.
The reaction is only for the primary amines. So basically, Phthalimide on treatment with ethanoic potassium hydroxide forms potassium salt of phthalimide, which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine, and aromatic primary amines cannot be formed. Aromatic primary amines cannot be formed by this reaction. Aromatic primary amines can't be formed by this reaction. Okay, because aryl halide does not undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed by the phthalimide. Okay, so let's go for the reaction. What is the Gabriel Phthalimide reaction? So basically, Gabriel Phthalimide reaction के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है थैलिमाइड, बट इन एनसीटी लॉ बुक देयर विल बी द नो थैलिमाइड. सबसे पहले हमको थैलिमाइड प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो फॉर थैलिमाइड वी रिक्वायर थैलिक एसिड. So Thalic acid is nothing but like that. This is my benzene ring. This is benzene ring. This is a resonating structure of the benzene. Everybody knows it. That is C double bond O OH. C double bond O OH. This is nothing but the thalic acid. This is nothing but the PTHALIC acid. Thalic acid. So basically, thalic acid in presence of twice of NH3. What will I get? Simply, this is the benzene ring. C double bond O. C double bond O. And here will be the NH2 and NH2. Okay, plus 2H2 molecule will release. Again undergoes in terms of ammonia NH3. I will get benzene ring. C double bond O means मुझे क्या करना पड़ेगा? NH2 and NH means मुझे अमोनिया निकालना पड़ेगा. So basically this NH2 can be written as like that. So this CH2 and basically NH3. So okay, so like that NH2 and this CH2 can be written as NHH. So basically this NH2 and this single hydrogen will be removed, and we get our corresponding product is nothing but C double bond O and NH. Okay, so this is nothing but this is the phthalimide, and from the phthalimide we can use the certain kind of reagents like ethanol-like solution, and we can form the primary amine. So this is we can see in the next reaction. Okay, एटलीस्ट हमको ये पता चला कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया? थैलिक एसिड को लिया, बेंजीन कंटेनिंग C डबल बॉन्ड OH ग्रुप ट्वाइस ऑफ NH3 उसमें हमने ऐड किया. सो दोनों OH ग्रुप निकल गए, उधर आ गए NH2. ओके, प्लस ट्वाइस ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिलीज, देन अगेन NH3 मॉलिक्यूल हमने रिमूव किया. सो बेसिकली NH2 NH वी गेट द करस्पॉन्डिंग थैलिमाइड. इस थैलिमाइड को हमको पकड़ना है, उसी के साथ आगे फर्दर रिएक्शन करके देन वी फॉर्म द करस्पॉन्डिंग द प्राइमरी अमाइंस. सो लेट्स गो फॉर दैट. Basically this is the benzene ring, this is our product C double bond O N H and H.
this N minus charge, yes, having the plus charge in presence of NaOH oblique KOH, Na positive OH minus, K positive OH minus. Okay, this OH and this H will release, we get our the corresponding product, that is again benzene ring, C double bond O, C double bond O, we get N minus K plus, N minus K plus. This is nothing but the potassium phthalate. We can call it salt, or apart from that, potassium PHA, potassium phthalimide. We can say that. Then again, in terms of the Rx, R plus X minus Kx will be released like that. We get our product, that is benzene ring, then C double bond O, C double bond O, Kx will be removed, we get Nr, N minus R plus. In the last step, we do the acid hydrolysis, HCl H2O, or we can say that H3O plus. It is also called as a hydronium ion. Then we get our corresponding product, that is RnH2 plus, that is C double bond O OH, C double bond O OH, that is phthalic acid, and we get our corresponding product, primary amine. ओके, सो सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने देखा कि प्राइमरी अमाइन हमने जब चालू किया, सो वी लर्न सो मेनी काइंड्स ऑफ nomenclature will be there. The first one is the common system, the second one is the IUPAC system, International Union of Pure and Applied Chemistry. In the preparation method, the first we say that nitrobenzene, how we can prepare the nitro primary amines by using the nitrobenzene by the reduction reaction in presence of H2 and the PT and PD, platinum और palladium. In the second reaction हमने देखा कि नाइट्रल से हमने कैसे एनिलीन तैयार कर सकते हैं, नहीं तो नाइट्रल तो बाय यूजिंग दी R single bond C triple bond N. From nitrile how we can prepare the primary amines. उसके बाद में हमने देखा स्टीफन रिएक्शन SnCl2 HCl. देन फ्रॉम अमाइड से भी हमने देखा कि कैसे हम प्रिपरेशन प्राइमरी अमाइन तैयार कर सकते हैं. बट देर इज वन पॉइंट दैट इन अमाइड वी कैन प्रिपेयर दी अमाइन्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. आफ्टर दैट नाउ मूविंग फॉरवर्ड दी Gabriel Phthalimide reaction. In Gabriel Phthalimide reaction we basically need what we need, that is the phthalimide. And how can you prepare phthalimide? By using the phthalic acid. Phthalic acid मुझे लगेगा, थैलिक एसिड का सिंपल रिएक्शन मैं करूंगा ट्वाइस ऑफ NH3 से, उसके बाद में मुझे थैलामाइड मिलेगा. देन थैलामाइड बाय यूजिंग द थैलामाइड, by doing the procedure of NaOH or KOH solution, H2O will be released to get the salt or potassium phthalimide. Then after potassium phthalimide, in presence of acid hydrolysis, we get the corresponding primary amine plus phthalic acid as a byproduct. So these are the reactions, we can say that. Or we can learn the new concept like Hoffman bromide degradation in the next part 2. So stay tuned and thank you so much.